Voice is slow off. Everyone, same issue. Am I audible? Same problem? Sir, ଟିକେ slow ଅଛି. No, sir, audible. Okay, ଟିକେ slow ଆସୁଛି. Maybe microphone ଟା ଟିକେ ତଳକୁ ଯାଉଛି. ठीक. How? Anyway, we'll. Okay. Let us start. आमे अप्रोच कौन रखिए तो आमे गोटे काम करिया विजन को कंप्लीट करिया विजन 365 because that is a must thing. If you are doing it the monthly, it is good. If you have not done also, no issues. We will try to cover it up. Then apart from that, some MCQs also will do. Okay. For this class, I am taking the MCQs from the GK video. Okay. If any other sources you are following, you can follow that. No issues. Okay. So, reference for that I have taken this GK2D because what I have seen last year GK2D directly direct questions. So we'll do that monthly जो GK2D option and apart from that it's vision. ठीक है. Screen is visible. Okay, let us do some MCQs first. April month में करेंगे start करिए. Then we'll go to our vision. Okay. So half an hour like that session we are going to do. माने किसी MCQs करिए और किसी theory करिए. Otherwise it will be little boring. Okay. Let us see. हाँ. So for question number 1. Voice break coach. Everyone. No, sir, audible. It's audible. Okay. Still it is low. I think now it is clear. I think. Okay. No, sir, it is clear. If anyone experiencing any problem, you can just rejoin. So I think the problem will be sorted out. Okay. Let's start with the questions because com time and career. The Linux U2 system. Good data gun control system. Okay. It was manufactured by one Indian company. Which was that company? It was by the BEL. Okay. So Ministry of Defense. You can say there are 3 wings are there. One is your DRDO and there are 2 other so public sector undertaking that is one is BEL, another is your HAL. Okay. So it is a gun control system. Automatic jo firing वगैरह होगा तो ता ऊपर होची. So India रे गोटे schemes अच्छी Ministry of Defense that is called the indigenously designed, developed and manufacturing. Under that scheme, this particular system has been developed. Okay. Coming to the question number 2, World Bank approved $100 million for the implementation of the State Capability and Resilient Growth Program. Okay, one program SCGRP, sorry RGP. SCRGP put a state level to resilience capacity development time. World Bank sanction करे. So any idea which state is this? जितने resilient word आसे ना, so it is always with respect to disaster management. So it is Odisha. So Odisha को sanction करची. Coming to third question, that is the Aboriginal and Torres Strait Islanders voice is associated with which country? So it is a federal advisory. Okay, it is a federal advisory body. जेमिति आमे autonomous council कोचु, district council कोचु, हमरो article schedule 5 schedule 6 under जेमिति हमरो provisions अछि. So like that it is with respect to your Australia because the Torres Strait अपन देखिए Torres Strait is between Australia and New Guinea, Papua New Guinea. ठीक अछि. So there are 2 questions can be formed from this particular current affairs. Directly पचरी परे Aboriginal and the Torres Strait. Aborigines भी अपन link करी परिवे Australia सहित. Otherwise Torres Strait is also there. It is between Australia and New Guinea. ठीक अछि. Coming to the 4th question. Which city hosts the Combined Commanders Conference? So Combined Commander Conference every 2 years गोटे biannual event हुए जैसे भी top commanders अच्छे different forces तो be it our military हो या paramilitary हो PM ताको chair करते. Recently जो event आहितला it was hosted by at the Bhopal. ठीक अछि. एटा भोपाल रे हितला. It's a biannual event.
one another question is HIFA. आपण सुनथिबे HIFA गोटे बॉडी क्रिएट कराइथि हायर एजुकेशन फाइनेंसिंग एजेंसी कहिथि. इट इज अ जॉइंट वेंचर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन आउ कहा को बैंक सहित मिसी कराइछि. ऑप्शंस देखिए कंफ्यूजिंग लागे बिकॉज़ जनरली हम स्टेट बैंक वगैरह पाबे बट दिस इज विथ कैनरा बैंक. Okay. So this was done with in coordination with the Canada Bank. Okay. Next, which country ALP गोटे company एटा से country रो GK today रो PDF कि हाँ this is GK today PDF. If you have it, if you have already done it, then well and good. Just हमें rapid fire way report से अपना आउटरीच चेक कर दंतु existing knowledge को. Otherwise, what you can say, we can skip the lecture also. Okay. Is it beneficial? Otherwise, I'll not do the GK today. Is it beneficial? মানে আমি rapidly যদি cover করছে ঠিক. Okay, ঠিক. हाँ, ठीक. ठीक. No issues. हाँ, we'll continue. Then गोटे ALP गोटे कंपनी तो को कंट्री को एटा सी गोटे बर्तन प्लानिंग करछन आर्टिफिशियल मेटेरियल सार. तो मेटेरियल सार कोन एटा गोटे टाइप ऑफ सेलेस्टियल यू कैन से एक्टिविटी जते बेले जो माने डेब्रिज पूरा अछि जो सेलेस्टियल यूनिवर्सल डेब्रिज पूरा से गुडा को जते बेले हाँ मैं पीडीएफ सेंड कर दूँ से डेब्रिज गुड़ाक जो अर्थ जो रोटेशन माने जो रिवोल्यूशन जो पाथ अच्छी से पाथ जो पाखापाखि आसे तो बिकॉज ऑफ द मैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड ऑफ आवर अर्थ तो ता सहित माने कांटेक्ट आसला पर से गुड़ाक जेमती आमे फायरवर्क देखुछन जेमती फुटिले जेम देखा जाए. ओके, so like that it is going to have some event. Okay, so it is meteor but that is a natural process. तो ताकू गोटे कंट्री माने आर्टिफिशियली करिया को जाउची दैट इज द जापान. आंसर इज जापान. तो ALP कौन इट इज ए कंपनी और टोटल जो माने जिनसा से करिया को जाउची इट वाज अंडर ए ब्रॉड हेडिंग ताकर गोटे माने प्रोजेक्ट रो नेम अछि से प्रोजेक्ट होती स्काई कैनवास. ओके, यू कैन गूगल इट एज ए स्काई कैनवास इफ यू कैन गेट ए दृष्टि आईएस रो गोटे तार राइटअप अछि बट आई डोंट फाइंड इट इज दैट मच हेल्पफुल फॉर योर मेन पर्सपेक्टिव. तो जस्ट फॉर द माने सेंस ऑफ योर प्रीलिम यू जस्ट रिमेंबर दिस. ओके, so this माने हम जो कहूचे आर्टिफिशियल मेटेरियल्स आर के प्लान करछि इट इज जापान. जापान गोटे कंपनी ALP. ओके, देन व्हिच कंट्री पास करछि गोटे माने यू कैन से लेजिस्लेचर दैट इज कॉल्ड सेफगार्ड मैकेनिज्म. कौन करिवो इट विल फोर्स द कोल माइंस एंड रिफाइनरीज टू मिनिमाइज देयर एमिशन. ओके, तो आमे जानछु ऑस्ट्रेलिया रे लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ यू कैन से कोल्स अछि और कोल रो बहुत अधिक एक्सप्लोरेशंस मध्ये हुए बिकॉज ऑफ द एक्सप्लोरेशंस एंड एक्सट्रैक्शंस ऑफ द कोल. सो इट लीड्स टू लॉट ऑफ एमिशंस. So to control this, semane ei mechanism taku eta gote act ko pass korchun that is called the safeguard mechanism. Okay, so safeguard mechanism with respect to Australia. Next, which institution decided to ban the practice of the individual having permanent seat on the board of listed company? Listed company ro artho kono जो कंपनीज गुड़ा को शेयर मार्केट लिस्टेड होती PSC रे हो बा NSC रे हो जानते दी प्रकार मार्केट आम कहूँ इन जनरल लॉट ऑफ मार्केट्स आर दैट बट जनरली दीटा मार्केट कहूँ गोटे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज आ गोटे हूँ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज. तो एगुड़ा को आम लिस्टेड कंपनी कहूँ. तो लिस्टेड कंपनीज को रेगुलेट करने इंडिया गोटे बॉडी अच्छी. तो व्हिच इज दैट बॉडी शेयर मार्केट को किए रेगुलेट करूचे इट इज अ सेबी. सो इट इज अ सेबी. तो आंसर इज सेबी. ठीक है. So which country is the host of the International Conference of the Human Wildlife Conflict and Coexistence? Okay, so human wildlife conflict और coexistence आपको किए माने वर्तमान को कंट्री को होस्ट करथिला एटा को होस्ट करथिला यूनाइटेड किंगडम. ओके, तो ए जो कॉन्फ्रेंस ता होची इट इज ए combined effort of IUCN, FAO और UNDP. Okay, this much you should remember. Next, सेंजन एरिया ना शुणी थे. तो सेंजन एरिया कौन जदि आप यूरोपियन यूनियन को जाउछन्ते कौन से 27 टा कंट्री को अपन ट्रैवल करा को चाहछन देयर इज ओनली वन वीजा यूनिट. यू डोंट नीड टू टेक द 27 इंडिविजुअल वीजास. ओके, आपको माने जो कोनते रिमूवल ऑफ बॉर्डर कंट्रोल मैकेनिज्म. ओके, तो सेंजन एरिया जदि केबे न्यूज रहसे इट इज रिलेटेड विथ द यूरोपियन यूनियन. ओके, so this is a digital सेंजन वीजा से माने करिया को बर्तन ट्राई करछन्ते. so that's why it was in news. 27 EU countries 8 अछंती. आपको हमें कौन कहूँ इट इज ए टाइप ऑफ बॉर्डर कंट्रोल एट द म्यूचुअल बॉर्डर. म्यूचुअल बॉर्डर माने कौन जमती इंडिया पाकिस्तान हम बॉर्डर अच्छी वाघा बॉर्डर कहूँ आमर चाइना सहित बॉर्डर अच्छी. दिस बॉर्डर लाइन माने आमे जदि गोटे जगह आउट जागु छिया को चाहू वी नीड सेपरेट वीजा एंड ऑल. सो दैट इज नॉट देयर इन केस ऑफ EU.
Not all the, see, one more thing you should remember, ସବୁ EU country Schengen area ରେ ନାହାନ୍ତି. Okay, that also you should remember. ଯେମିତି କି ସବୁ EU country ର euro is not the currency. There are certain EU countries are there that euro is not their currency. Similarly, certain non-EU countries are also there. ସେମାନଙ୍କର ଏଇ ୟୁରୋ ହଉଛି ତାଙ୍କର କରେନ୍ସି. ସୋ ଲାଇକ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ସିଜନ୍ ମଧ୍ୟ ଯୋଉମାନେ ମ୍ୟୁଚୁଆଲି ଏଗ୍ରି ହଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଗୁ ହଉଛି. ତ ଦିସ୍ ଇଜ ଫର ଦ 27 countries. Okay. Which country recently held a referendum to adopt a new constitution, जोटा कि April 2023 ରୁ adopt होगा. It is Uzbekistan. Uzbekistan is one of the central, it is the central Asian country. ठीक ଅଛି. तो ସେମାନଙ୍କର ଯେମିତି ଆମେ କହୁଛୁ ଆମର କି sovereign, socialist, secular, democratic and republic ଆମ preamble ରେ ଲେଖା ହେଇଛି. So for them it is going to be sovereign, democratic, legal and social state. Okay, so that is there. So ଏତେ details ମନେ ରଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ. This is just for the idea I have told you. There is one more thing, the Dagger model, Dagger computer model. It is a AI based computer model. ତାକୁ କୋଉଠି यूज କରା ହବ? This will be used in the geomagnetics ପାଇଁ यूज ହବ. Deep आ विषय भितर को ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ. Okay, so Dagger ର full form ଅଛି deep learning geomagnetic perturbations. Not detail is required. Okay, so which is the first American state to pass a resolution जोटा कि Hindu phobia against. Okay, so it is the state of Georgia. Okay, United States ଆମେ ଜାଣିଛୁ 50ଟା state ମିଶିକି ହେଇଛନ୍ତି United States. It is the state of Georgia. ସେ ଗୋଟେ resolution pass କରିଛି condemning to Hindu phobia. Okay, next, Nevada Del Rusa volcano. Okay, so this was in news on country. This is in Colombia. Okay, it is a South American country. Recently volcanic eruptions hitla, and this is the highest active volcano in the Andes mountain. So Andes mountain is the longest mountain chain. Highest mountain is Himalayas ko portion, longest mountain is the Andes. It is in the South America. So South America Andes ro pakhre gote country ଅଛି that is called Colombia. Colombia re ei ଅଛି ei volcano ta ଅଛି. Okay, so that is the largest, it is the highest active volcano in the Andes mountain. That much we should remember. Next, which country recently described India as a friendly, sovereign, global center for power? Okay, so it is Russia. Russia पता दीटा country को a designation पेची, that is India and China. Okay, so it has described India and China as the friendly, sovereign, global center for power, center of power, not for. Okay, which payment bank launched करिछि WhatsApp banking service? So WhatsApp banking service launch करिछि Indian Post Payment Bank. Okay, so in collaboration with the Airtel सहित मिसिकी सेटा से launch करिछि. But this is not related with the Airtel Payments Bank. Okay, Airtel Payments Bank, that is different thing. Airtel ro payment service ta hochi Airtel Payments Bank, but Airtel with the telecom service भी दोची ना. So with collaborations with the Airtel telecom service, Indian Post Payment Bank has launched WhatsApp payment service. Okay, banking service, not payment service. At present, how many percentage of inhabited villages in India have declared themselves as a ODF? ODF, open defecation free हमें कोचो स्वच्छ भारत मिशन रे हमें स्टार्ट कोचो जिनसा को डिक्लेयर करिया. अराउंड 40% रूरल एरिया हमें ODF रे अच्छो. ठीक है. नेक्स्ट, सालार डी अटाकामा. ओके, एटा कोन? एटा होची वर्ल्ड रो लार्जेस्ट सॉल्ट फ्लैट. सॉल्ट फ्लैट में कोन जेंति रन ऑफ कच एरिया अछि जोटी कि इट्स से मासी लैंड, सलाइन सॉइल्स देखा जिवो, सिमिलर टाइप ऑफ सॉइल. ओके, जोटा कि मोर माने यू कैन से सलाइन सॉइल्स विल बी फाउंड लार्ज अमाउंट ऑफ. इट इज कॉल्ड सॉल्ट फ्लैट. तो एटा कोठी अछि? अटाकामा डेजर्ट, चिली रे अछि. इट इज द चिली और पेरू रो बॉर्डर अछि, बट दिस इज इन चिली. ओके, तो हां, तो व्हाई इट इज चिली? बिकॉज ये जो पर्टिकुलर फ्लैट अच्छी ये आपन को लिथियम रिजर्व्स मिलिबो. ओके, आ इंडिया चिली सहित कोलैबोरेट करके लिथियम रिजर्व्स को वैल्यूएशन पे ऐड करके चेष्टा करछि. ओके, एंड वन मोर थिंग, द कॉपर प्रोड्यूसिंग, चिली गोटे कॉपर प्रोड्यूसिंग कंट्री. हां, लिथियम ट्रायंगल अछि. देयर आर 3 कंट्रीज लिथियम ट्रायंगल्स आर. कैन यू टेल मी व्हाट आर द 3 कंट्रीज? ABC, अर्जेंटीना, चिली एंड बोलिविया. ठीक है. So largest lithium mines ମଧ୍ୟ आज डेट में माने it is believed to be in the Chile. ठीक है. So that's why Chile is very important for India. Next, International Day for the Mines Awareness and Assistance in the Mine Action. Not that important. It is in April 4. You can skip it. Next, Central Bureau of Investigation CBI केबे कमिशन हेतला
It is formed in the year of 1963. The commission comes under which ministry? Under the Home Affairs Ministry. Okay. तो को पैनल रो सजेशन रे हितला को कमिटी सजेस्ट करथला सीबीआई और सीबीसी कमीशन करिया पे सर संतनम कमिटी संतानम कमिटी ठीक है वेरी गुड संतानम कमिटी सजेस्ट करथला सीबीआई सीबीसी कमीशन करिया नेक्स्ट व्हिच स्टेट हैज डेवलप्ड सोलर रूफटॉप ऑनलाइन पोर्टल सोलर रूफटॉप ऑनलाइन पोर्टल किए करूची दिस इज ए गोवा ओके जनरली हमको लागियो राजस्थान बा कर्नाटक वगैरह बट दिस इज गोवा नेक्स्ट Ukraine recently placed an order for the procurement of Rosmo multi-purpose armed vehicle. So, kaha to purchase? This is they are going to purchase from Poland. Okay. So, tapen payment USA karibe, but they are going to procure from Poland. Okay. Next. Yuichi Sakamoto. Okay. John recently passed correctly. He is from Japan. Okay. He is associated with which field? He is associated with the art. The Japanese pop pioneering and Oscar-winning composer generally. So he is something like that you can remember. Next is Izu Osawara. Okay. Izu Osawara Trench. So this is located in the Pacific Ocean, Western Pacific Ocean. So kahi ke eta news re thila because around 8,000, this is below 8,336 meters. So voice clear asuni? Everyone, same problem? No sir, audible sir. Audible, okay. So see, under this much depth, under 8,336 meter depth re first time पे गोटे जुवेनाइल स्नेल फिश को देखाइतला एते तळ माने डेप्थ रे ना जनरली कोनोसी लाइफ एग्जिस्ट करे नाही लाइफ एग्जिस्ट करे बट इन द फॉर्म ऑफ वेरी जो मिनिएचर लाइफ देखा जाए जोटा को हमें इन जनरल फिश वगैरह जो बॉर्डर लाइफ दैट वी वोंट फाइंड बट दिस इज फर्स्ट टाइम इट इज फाउंड दिस अंडर दिस रेंज इजू Osawara Trench. Okay, Izu Osawara Trench is in the Pacific Ocean, Western Pacific to be precise. What is the total merchandise values of the e-government? माने कोटे आपको पोर्टल अच्छी जेम पोर्टल कोंती e-gem पोर्टल गवर्नमेंट रो जते प्रोक्योरमेंट होची sorry for the inconvenience sir on the CA Ministry of Personnel and Grievance Home Office ला सुनी sure सर सीबीआई है सर मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल एंड ग्रीवेंसेस के अंदर आ रहा है ऐसे होम ऑफिस ऐसे नहीं नो सर अपन टिके कंफर्म भी यदि ये okay करेंगे okay I'll check this for the time being we are not concluding on this one ठीक है okay let us continue ठीक है if it is home affairs then good thank you for your suggestion माने परसेंट हमें ई कार्ड रो परचेज करछु फ्लिपकार्ट रो government merchandise if you want to purchase then you have to purchase from a government gem portal e-gem portal okay so that e-gem portal माने बर्तन तांकर gross merchandise value केते it is 2 lakh crore not that important but just for the and GST collection March month रे केते थला it was 1.6 lakh crore generally 1.5 lakh crore को हमें माने बहुत लिमिटेड टाइम माने क्रॉस करछु इट वाज द फोर्थ टाइम वी हैव क्रॉस 1.5 लाख करोड़ to अधिक per month collection of GST that's why it was on news next Mahila Nidhi it is the first ever women cooperative fund it was launched by which state it was launched by your state of Rajasthan okay तो निधि होची कोन निधि होची गोटे स्मॉल सेविंग हैबिट जो हम कहू स्मॉल सेविंग तो लाइक दैट निधि स्कीम्स वगैरह सुनी थी केबे तो इट इज ए कोऑपरेटिव इनिशिएटिव माने हमें म्यूचुअल कोऑपरेशंस रे माने निजे निजे सेविंग करनते स्मॉल सेविंग सो दिस स्कीम वाज लॉन्च्ड बाय द स्टेट ऑफ राजस्थान दैट्स ऑल देन व्हिच स्टेट replaced with the लोकतंत्र प्रहरी सम्मान एक्ट so it this act was माने आंसर होची हिमाचल प्रदेश रे एक्ट थिला ताको स्टेट लेजिस्लेचर रो बिकॉज़ जो माने हमर इमरजेंसी समय रे दे हैव बीन इम्प्रिजन जेल जो माने कहितले तो से माने गोटे टाइप ऑफ पेंशन होतले माने इट वाज फ्रॉम 20,000 to 12,000 per month in that range so recently गवर्नमेंट ताको स्क्रैप कर देले ओके द हिमाचल गवर्नमेंट नेक्स्ट कोप इंडिया एक्सरसाइज दिस इज रिसेंटली कोट हितला वेस्ट बेंगल रे हितली एक्सरसाइज कहा भीतर हुए इंडियन एयरफोर्स और यूएस एयरफोर्स भीतर हुए दैट इज द कोप इंडिया एक्सरसाइज ओके
what is the name of the single shape that can be used to cover the surface completely without creating a repeated pattern? माने जेमते हम घर रो फ्लोर अछि आमे टाइल्स वगैरह दोछु ता ऊपर तो सब गुडा को टाइल्स केमती द स्क्वायर बा रेक्टेंगल टाइप ऑफ टाइल्स थाउछि एमती गोटे गोटे शेप बा एमती गोटे टाइल डेवलप करा हैछि जोटा कि आपण जदि गोटे फ्लोर को कवर करछंती तो सब गुडा को गोटे डिफरेंट डिफरेंट शेप रहबो what that is called the Einstein. Yes, that is called the Einstein tile. Okay. So which country hosted the fourth India Central Asia Cultural Minister meeting? India host करथला माने 2020 रे गोटे इंडिया स्टार्ट करथला इंडिया सेंट्रल एशिया मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस. ओके बट फर्स्ट टाइम पे कल्चरल मिनिस्टर मीट हेछि आगुरु को होतला इंडियन सेंट्रल एशिया मीट होतला 2020 ऑनवर्ड्स. तो रिसेंटली 2022 रे माने 2022 रे हम कल्चरल मिनिस्टर आपको होस्ट करछन्ते. इट वाज hosted at the India. Next is a squirrel pox virus. So it was spreading a disease. Co country है, it is in UK. Squirrel pox कौन? दी प्रकार squirrels देखा जानते. गोटे red squirrel, आउट अछि grey squirrel. Red squirrel जो चुनती invasive. माने UK रो माने parent squirrels नाती. समानकर native squirrels नोंती. So red squirrels गुड़ा को North America रो migrate करचुनती by any means. Okay, and they are invasive because of this red squirrel जो तंकर original grey squirrels रहले समानकर बर्तमान को होची तांकर population is declining. Okay, so this is what next. Which country unveiled the laser system to shoot down the incoming UAVs जो unmanned aerial vehicles को shoot down करते हैं? It was Japan. Japan पची ये टेक्नोलॉजी था. Aroma mission. So Aroma mission first co-state launch itla, it was launched in the state of Jammu and Kashmir. Recently the news रे एथिते अछि because Himachal Pradesh मध्ये similar scheme को माने launch करिया को चाहछि because through that scheme Jammu and Kashmir has registered good amount of result. Okay, good evening. ठीक अछि. So that's why it was in news. So which country has banned the English and other foreign language from the official communication group? It was here Italy. Italy banned करछि. Not that important. Petro Vitova who जी की मियामी ओपन जितले से को कंट्री को बिलोंग करछथि चेक रिपब्लिक को बिलोंग करछथि स्पोर्ट्स न्यूज आजिकली पछगनी बट स्टिल वर्ल्ड एनर्जी ट्रांजिशन आउटलुक 2023 को बॉडी रिलीज करछि. इट इज रिलीज्ड बाय इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी रिलीज करछि. Okay, coming to next one. Which Indian state has organized Food Conclave 2023 organized Kurtla brainstorming event? It was organized in Telangana. Not that important. I'll tell you which is very important. You should remember. Which is not that important. I'll tell. Then Nathula Pass, Co Mountain Ryochi. It is in Sikkim Ryochi. Apart from Nathula, another pass is in Sikkim. Important pass Ryochi. Sir, Jipla. Jalipla. Very good. Chola no, Jalipla. Chola achhi pass. Okay. Which country launched the Ukraine Security Assistance Incentive? Eta launch करछि, USA launch करछि. Next, Petroleum Planning and Analysis Cell. Petroleum Planning and Analysis Cell co-ministry under आछि, obviously Petroleum Ministry under आछि. तो प्रथमे कोन थिला माने बिफोर 2002 जो इंडिया रे जो प्राइस को कंट्रोल करा होतला इट वाज इट माने ए जो मेकानिज्म हमको एडमिनिस्ट्रेट प्राइस मेकानिज्म. ओके, तो ताकू कंट्रोल करिया पे गोटे बॉडी थिला ताको हम ओसीसी कहउछि. ओसीसी माने ऑयल कोऑर्डिनेशन कमिटी. से ऑयल कोऑर्डिनेशन कमिटी को स्क्रैप करिकि पेट्रोलियम प्लानिंग एंड एनालिसिस सेल को क्रिएट कराइछि. ओके, एते डिटेल दरकार नै बिकॉज़ एज वे रीडिंग आई हैव टोल्ड यू. तो व्हिच इज द हेडक्वार्टर ऑफ जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन कोठी माने सऊदी अरब रे अछि. सऊदी अरब एग्जैक्टली कोठी अछि को जगह Riyadh. Riyadh रे अछि. ओके, तो नेक्स्ट होची इंटरनेशनल डे ऑफ कॉन्साइंस केबे सेलिब्रेट करछु? अप्रैल. इट इज अप्रैल 5 रे सेलिब्रेट करछु. नेक्स्ट one second. No. Cantonese Island, which was seen in news, is located in which country? It is located in Philippines. कौन पे एटा न्यूज रे थिला बिकॉज़ ए आइलैंड रे मध्ये रिसेंटली अर्थक्वेक माने अर्थक्वेक आसला बिकॉज़ ऑफ दैट अर्थक्वेक चांसेस ऑफ सुनामी वाज देयर. ओके, दैट्स ऑल. Next is infertility prevalence estimate from 1990 to 2021 report. एटा की पब्लिश करछि? WHO पब्लिश करछि. हाँ मते लागुतला जेदा रे अछि कहि कि बट someone has told Sorry, sir. Sorry, sir. yes sir, it is in Jeddah. ठीक है, thank you. Next,
which type of paint is used as the nanoscale structure arrangements of the aluminum and it is lightest paint in the world. तो सबुठु lightest paint हिसाब रे जो आमे paint करूछु तो आमे कोन pigmented paints यूज करू जोटा कि नेचर पाई मध्ये टिके problematic because of this different type of emissions is it is causing and human health पाई मध्ये it is not good. So that replacement रे गोटे plasmonic paint गोटे develop कराइछि. It is very light out तार बहुत emissions मध्ये बहुत कम because it will contain structural arrangement of aluminum. Okay, not any heavy metals. Next, lean diabetes. So it is a diabetic condition that is spreading among the tribal people of a particular state. Co state of tribal people को विपरीत state कोची it is in Chhattisgarh. ठीक है जी. कहीं ये जिनसटा होची छत्तीसगढ़ रे because long time पर्यंत starvation और at a time माने high amount of consumption of your carbohydrate. Okay, so that's the main problem. माने बहुत समय पर्यंत गोटे time intermittent starvation होची, then again large consumptions of carbohydrates. That's why this type of situation is arising. Next, Hebrosectum tongana sangmai. Okay, so it's a species of what? It's a species of spider. Okay, so spider ta कोठी मिलेची मेघालय रे मिलेची. This spider it is in Meghalaya. तांकर गोटे freedom fighter थिले टोंगना सांगमाई. तो तांको नारे दिया हिची spider रो नाम. Next होची which state or the UT launch करची family doctor program. It was launched by Andhra Pradesh. So आनकर जो आमे कोचो comprehensive preventive health care को provide करिया पे. Okay, just give me 1 minute. Okay, audible. Which state has stopped? Which state has tabled गोटे सुख आश्रय. सुख आश्रय तो full form होची care, protection and self reliance of the children. It is a bill. बर्तने bill by draft format जोटा था. It is not that important. You can skip this type of questions, but it is in Himachal Pradesh. Okay, so which state has stopped India Justice Report 2020? तो को state रे better justice implementations होची like that one report is being released. एटा को state top करची? It is Karnataka top करची. Union Information and Broadcast Ministry signed an agreement with which company to boost India's creative economy? Okay, what is a creative economy? जो इकोनॉमी इकोनॉमी जते बड़ा में आर्ट बा म्यूजिक कल्चर बा जो भी आमे टाइप ऑफ माने जो एक्टर्स वगैरह सब देखुछु बा जो भी आर्ट फील्ड रहला ताको यूज करके जो इकोनॉमीटा जनरेट हो जेमते आमे माने Amazon प्राइम रे किछि वेब सीरीज देखुछु. ओके, सो सेठी कोन गोटे टाइप इकोनॉमी होची तो बहुत जण सेठी एंगेज होचंती से माने भी किछि अर्निंग करचंती प्लेटफॉर्म भी किछि इकोनॉमी जनरेट करची. सो इट इज कॉल्ड ए क्रिएटिव इकोनॉमी. तो कहा से तो मिसी करची Amazon इंडिया सहित मिसी करची. तो Amazon प्राइम जो वीडियोस अछि तो सेही कोन करिवो जो हमरो फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया FTII आउ सत्यजीत रॉय फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट सेही मानको जो भी एलुमिनीज रहिबे तांको सहित मिसी ता करिया चेष्टा करियो. Okay, what is the repo rate? ବର୍ତ୍ତମାନ repo rate କେତେ ଅଛି? It is 6.5. Know this. एटा एते important एबे नाही because पुनी आउथरे एग्जाम पूर्वरु चेंज हे थिबो. So which institute released the stacking of the benefits lessons from the India's digital journey? तो ए गोटे टाइटल रे गोटे रिपोर्ट पब्लिश करिछि. It was published by IMF because इंडिया रे वर्तमान हम बहुत गुडे डिजिटल इनोवेटिव माने इनिशिएटिव्स कंसीडर करछि गवर्नमेंट से UPI पेमेंट हो बा DBT हो. तो इंडिया जिते बड़े 10-15 इयर्स पूर्वे इंडिया जो कंडीशन थिला जो टाइप रो सिचुएशन थिला आज डेट रे जो भी आमे माने लीप नेचु डिजिटल वर्ल्ड रे
so it's a success story ठीक अछि ताकू गोटे रिपोर्ट रे ड्राफ्ट करिछि by the IMF okay next is the Gaia mission तो Gaia mission कहाँ से तो associated it is associated with the European Space Agency कौन Milky Way galaxy रो better understanding ପାଇଁ okay this Gaia missions was launched okay ଆଉ ଏ Gaia missions दीटा black hole को ମଧ୍ୟ identify करिछि just keep in your mind तो what is a raccoon stealer raccoon stealer so raccoon stealer एटा गोटे malware जी कौन हम कि मेल थ्रू रे डाउनलोड हो जनरली समस्त पब्लिक टार्गेट कराहेनी किसी सेंट्रल गवर्नमेंट रो 8टा प्रीमियर माने इंस्टीट्यूशंस ता बॉडी ताको टार्गेट करछन्ती जेमति कि आईटी डिपार्टमेंट सेंट्रल पैरामिलिटरी फोर्सेस लाइक दैट ओके तो एटा हमरो जो नेशनल टेक्निकल रिसर्च एंड ऑर्गेनाइजेशंस रहिचे तो सी ए जिंसटा रिलीज करथिला ओके तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो अछि सेटा माने जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप को जो प्रोटेक्ट करछि को डेट ऑनवर्ड्स प्रोटेक्ट करछि ओके तो दिस इज योर माने अगस्त 15 1947 आ अर्थ कोन अगस्त 15 1947 परठू माने पूर्वरु जो जगह रे जो टाइप रो वर्शिप होचे जोटी सपोज मुस्लिम्स माने किछि वर्शिप करछन्ती बा हिंदूज किछि वर्शिप करछन्ती बा अदर रिलीजन वर्शिप करछन्ती सेही जगह रो वर्शिप चेंज हबो नाही ओके देयर वाज एन एक्सेप्शन इट वाज केप्ट ड्यूरिंग दैट इंसेप्शन ऑफ द एक्ट सेटा को राम जन्मभूमि अयोध्या को एक्सेप्शन रे रखाइतला ठीक अछि तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट केबे रिलीज हेतला केबे एनएक्ट हेतला इट वाज इन द ईयर ऑफ 1991 रे हेतला ओके which institutions release kurchi government trends report release kurchi ha so government trends report release kurchi Deloitte centers for the government insights okay not that important which country has launched the overseas security assistance program eta launch करछि जापान सेमानकर माने जो पुअर कंट्रीज गुडा कछन्ती सेमानकर डिफेंस को स्ट्रेंथेन करिया पे किछि फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करिवो जापान ओके इट विल बी लाइक दैट नेक्स्ट द ऑर्डर ऑफ व्हाइट ईगल एटा को कंट्री रो हाईएस्ट डिस्टिंक्शन अवार्ड इट इज फ्रॉम द स्टेट माने इट्स फ्रॉम द पोलैंड रो हाईएस्ट ऑर्डर जोटा कि काहा को दिया हेतला जेलेंस्की को दिया हेतला यूक्रेन रो माने तांकर प्रेसिडेंट को तो प्रोजेक्ट CAV 4th it is a first registered service which will of which country to use full size autonomous buses एटा गोटे यूके रो प्रोजेक्ट से कोन करिवो और जो हमें ड्राइवरलेस ऑटोनोमस बस कहूछु ताको से लॉन्च करिवो तो एते इंपोर्टेंट नो यू कैन लीव इट नेक्स्ट कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट कोठी अछि इट इज इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु इट इज द लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर माने कैपेसिटी वाइज इट इज द लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट इंडिया कहा कोलैबोरेशन रे करछि रशिया रो कोलैबोरेशन रे करछि ओके वी नो दिस टॉप स्कीम व्हाट इज द टॉप स्कीम टारगेट द ओलंपिक पोडियम स्कीम तो एटा की को मिनिस्ट्री अंडर आछि मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स ठीक अछि लंपी स्किन डिजीज एटा गोटे हाई मोर्टालिटी रेट देखाउछि जनरली कैटल्स को पकड़े हुए इट इज अ वायरल डिजीज यू नो दिस which state has approved the agreement with the KFW but a KFW hoji kon it is an mane ye kon Kerala government KFW this is an German development bank ta saito gote agreement karichi Kerala green energy corridor ku funding kariya pai okay that much you should remember okay who is the head of the committee it was set up by Ministry of Urban Affairs कौन एग्जामाइन करिवो जो प्रोजेक्ट गुडा को स्टेल ही जाय छी माने जो प्रोजेक्ट गुडा को इम्प्लीमेंटेशंस अधारे रही जाय छी ताकू कौन कारण जो से रही गला और को वे फॉरवर्ड ताको कंप्लीट करा जाय परिबो ओके इट वाज अंडर द chairmanship of Amitabh Kant what is the India's growth that is been forecasted by the World Bank it is 6.3 एते important नो next is B-52H एटा गोटे स्ट्रेटेजिक बॉम्बर एटा कहारो यूएसए रो गोटे स्ट्रेटेजिक बॉम्बर माने बुझछन त माने जो एयरक्राफ्ट गुरा को जो स्पेसिफिकली डिजाइन हेता है केवल बॉम्बिंग करिया पे जेमति कि न्यूक्लियर बॉम्ब पडितला हिरोशिमा और नागासाकी ऊपर तो इट वाज बॉम्ब्ड बाय ए पर्टिकुलर प्लेन मैं एमति नै जे आपण पैसेंजर इंडिगो प्लेन रे नै कि कावर पके दिले सो दैट वाज स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स कोन ताको दैट इज अ B-52H तो एटा यूएसए रो एबे रिसेंटली यूएसए आउ साउथ कोरिया भितरे गोटे एक्सरसाइज हितिला मिलिटरी एक्सरसाइज इन दैट दे हैव शोकेस दिस ओके नेक्स्ट द ड्राफ्ट नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो हमरो न्यू स्कूल एजुकेशन पॉलिसी अछि तो एटा केते रु केते वर्ष पिला को टारगेट करछि इट इज 3 to 18 वी नो दिस ओके तो व्हिच मिनिस्ट्री हैज नोटिफाइड द अमेंडमेंट ऑफ द इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएटली गाइडलाइंस जो हमें कहूछु माने सॉफ्ट टच गाइडलाइंस
जो आपणकर डिजिटल मीडियास जो सोशल मीडियास रहिले सेमानक पय इट इज बाय द MIT इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी ओके जूस मिशन कहार इट इज यूरोपियन स्पेस एजेंसी रो जुपिटर आईसी मून एक्सप्लोरेशंस जुपिटर रो बहुत गुडे मून्स अछि हाईएस्ट नंबर ऑफ मून्स अछि जुपिटर रो जो मून्स गुडा तीनटा मेन अछंती मून गोटे होछि कैलिस्टो गैनामाइड एंड यूरोपा ताकू बेटर स्टडी करिया पे दिस मिशन वाज लॉन्च्ड बाय यूरोपियन स्पेस एजेंसी ओके हे फीवर टा जनरली को माने कंट्री रे बहुत अधिक आउटस्प्रेड देखा जाए इट इज इन जापान तांकर सब बेले स्प्रिंग सीजन रे पोलेन्स गुडा को बढ़ी जाए बिकॉज ऑफ दैट इट इज ए काइंड ऑफ एंडेमिक प्रॉब्लम से मानकर ओके तो हे फीवर इज एसोसिएटेड विथ द जापान okay it is a seasonal allergic reactions which state is associated with the electronic knowledge network it is बिहार कौन करछि रेलटेल कॉर्पोरेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रो गोटे मिनी रत्ना माने पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग एटा रेलटेल सहित मिसिकी सेमानकर जो कॉलेजेस गुडा को रहिला माने हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस गुडा करे वाईफाई और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करिया पे दे हैव अंडरटेकन दिस प्रोजेक्ट दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक नॉलेज नेटवर्क ओके So, as per the Indian Space Policy 2023, co-institute को focus institute on the research and development रो माने मार्क माने ताको से पोजीशन दिया है जी it is for the ISRO स्पेस एजेंसी रे इंडिया रो स्पेस एजेंसी तीनटा जिंस मन रखिए गोटे होची ISRO नेक्स्ट इज योर माने NSIL and finally in space this one in space okay तो NSIL ISRO and in space कहि परिबे तीन जन डिफरेंस कोन अछि एनीवन anyone know the difference between the three ISRO तो हमें जानछो 1969 रे एस्टैब्लिश हितला जे कोनोसी भी स्पेस मिशंस वगैरह से सब जिंस ISRO डेवलप करथला ISRO रो जो कमर्शियल विंग ता अछि जोटा को जेमते हमें फॉरेन सैटेलाइट्स वगैरह लॉन्च करछु ओके तो किछि पैसा में ऑन करछु ISRO ऑन करछु दैट इज बीइंग टेकन केयर बाय द NSIL ओके आउ गोटे जो रहिला इन स्पेस जो स्पेस फील्ड रे स्पेस एक्सप्लोरेशन फील्ड रे प्राइवेट सेक्टर को माने अधिक माने यू कैन से टू इंसेंटिवाइज द प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्वमेंट इनटू द स्पेस सेक्टर इन स्पेस को क्रिएट करा हिची इट इज नॉट ए ऑर्गेनाइजेशन ओके से निजे किछि करिबनी बट प्राइवेट इन्वॉल्वमेंट इन द स्पेस साइंस ताकू से अधिक प्रोत्साहन देबो ठीक अछि सो दैट इज द एम बिहाइंड दिस इन स्पेस नेक्स्ट इज okay this is the siren spagnicola okay it is discovered recently it looks like which type of species eta gote eel type ro dekha jaye okay that not that important so as per the global so shall we stop here mane ame barton pt ku move kariya ki already we have completed half an hour I think okay ठीक है so we have covered 75 questions the rest because and I mean hardly 2 to 3 days I'm cover for that go to PT sorry GK today and we'll move to the PT सर सबुदिन एई टाइम रहइबो देखो टाइम ना टिके फ्लक्चुएट हे पारे बिकॉज़ माने ऑफिस सहित टिके एडजस्ट को पड़े मते और केते बळे माने ऑफिस रे किछि ड्यूटी पड़ जाए अधिक सर सर करंट अफेयर केते मंथ रे देखिबु सर करंट अफेयर्स तो देखो सेफ साइड पे तो हमें अप्रैल को तो देखि देबो माने लास्ट अप्रैल रो सर लास्ट अप्रैल रो ए माने जेते पर्यंत एग्जाम जुलाई होचे कोन हां जेते जे एग्जाम हो ता पूर्व पर्यंत आज्ञा सर ठीक है ओके तो विल स्टार्ट विद द पीटी the first info होची ग्रोथ डेवलपमेंट एंड पॉवर्टी एलिवेशन ओके तो सही भितर गोटे फर्स्ट कांसेप्ट हमहु जाना पड़े दैट इज कॉल्ड द जीडीपी इन द जीबीए ओके व्हाट इज जीडीपी व्हाट इज जीबीए एनीवन किसी आईडिया कहां को अछि see GDP is the gross domestic product हमें कहूछु GVA is the gross value addition it is the name suggest but difference ता कोन हमें जरी difference को देखिया को जिबा GDP होची total माने market value of all the final goods and services that is produced inside the माने Indian territory भितर से Indian produce करू বা foreigner produce करू it will be the same किंतु जेतोले GVA कथा कहूछु सेटा हमें कोन कहूछु it is the again value of the total goods and services that is produced
बट ताको हम माइनस कहा से तो करूछु जो इनपुट कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल ते बुझिया को चेष्टा करंतु सपोज गोटे माने गोटे एग्जांपल दबा गोटे फैक्ट्री अछि जे गोटे कार ही प्रोड्यूस करूची ठीक अछि से कार रो प्राइस होची 10 लाख रुपीस ठीक यदि से वर्तमान से फैक्ट्री रो मो जीडीपी बाहर करबी इट इज गोइंग टू 5 लाख ठीक अछि बट जदि मु तार जीबीए बाहर करबी तो 5 लाख रो कार जदि फाइनली हैला बट ता फाइनली माने सॉरी 10 लाख जदि कार प्रोड्यूस कला ता किछि तो इनपुट कॉस्ट लागि थिबो सपोज 3 लाख लागि छी 4 लाख लागि छी ताकू हटे देबा पड़ता तो माने 10 लाख माइनस 4 लाख इज इक्वल टू 6 लाख तो से 6 लाख ता होची तार जीबीए सो इट इज द डिफरेंस बिटवीन द जीडीपी एंड जीबीए ओके तो जीडीपी और जीबीए को आमे जनरली कोन करछु जीडीपी को मेजर करछु आउटपुट मेथड इन माने इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड रे किंतु हमें जीडीपी को जदि जीबीए को मेजर करबा हमें ताको आउटपुट मेथड रे ही ताको मेजर करछु आ जीबीए ता केते बळे हेल्पफुल जेतेबेले आमे सेक्टर वाइज किछि कैलकुलेशंस करिया को चाहूछु ओवरऑल कंट्री रो इकोनॉमिक मेजरमेंट इज बेस्ट डन विथ रिस्पेक्ट टू द जीडीपी जीडीपी द्वारा बेटर करि परिबा बट जीबीए को द्वारा हमें सेक्टर ग्रोथ को देखि परिबा माने प्राइमरी सेक्टर टर्शियरी सेक्टर सेकेंडरी सेक्टर माने जेम हम कहूछु सर्विस सेक्टर रो भलो ग्रोथ होची सो इट इज बेटर कैन बी जज विथ रिस्पेक्ट टू योर जीबीए rather than जीडीपी ओके तो जीडीपी और जीबीए भितर गोटे रिलेशंस भी अछि यू कैन सी दिस इज जदि जीबीए सहित आमे टैक्सेस को मिसई की सब्सिडी को माइनस कर दोजे ताको आमे जीडीपी कहूछु ओके तो जीडीपी रे टैक्स थाए और सब्सिडी न थाए एतिके मन रखिबे ओके तार अर्थ कोन जदि गोटे नेशन रो टैक्सेस कलेक्शंस बढ़ुची बट सब्सिडी कमुची देन फाइनली कोन हबो सेही कंट्री रो जीडीपी टा बढ़िबो बट जीबीए विल कम डाउन तो टैक्स यदि अधिक अछि then tax collection is more then GDP will be more if subsidy is more then GBA will more okay so inverse relations अपन मन रखिए that much is important हाँ कौन sir please explain this again see GDP और GBA भितर डिफरेंस ता होची कोन जेतोले GBA अछि अपन पाखरे से see before that just see this one देखंतु आमे जेतोले कहूछु ना तीन प्रकार जिंसो गोटे होची इनसाइड द फैक्ट्री रो गेट आउ मार्केट तीन प्रकार कांसेप्ट बुझाबो चेष्टा करंतु व्हाट इज इनसाइड द फैक्ट्री इन माने फैक्ट्री रे आपण किछि जिंसो प्रोडक्शन करिया पे बर्तन भितर को नै कि आसले जिंसो तो कोन दरकार गोटे फाइनली गोटे जिंसो प्रोड्यूस करिया पे आमे कहूछु ना फैक्टर कॉस्ट दरकार फैक्टर कॉस्ट तो इकोनॉमी रे पढ़थिबे ना फैक्टर कॉस्ट को हम चारटा टाइप रो जिंसो कहूछु लैंड लेबर कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर ठीक अछि ए चारटा मिसिला परे फैक्टर कॉस्ट हे गेला प्रोडक्शन हे जिवो किंतु जेतोले फैक्ट्री गेट कोची अर्थ कोन बर्तन प्रोडक्शन हे गेला सपोज गोटे कार प्रोड्यूस हे गेला बर्तन से कार जेतोले मार्केट को जीवा पे रेडी अछि तो से माने ता ऊपरे गवर्नमेंट किछि टैक्स भी तो पकोची एक्साइज ड्यूटी वगैरह पकोची ना ठीक अछि तो से जेतोले फैक्टर कॉस्ट हला जीबीए फैक्टर कॉस्ट ता ऊपरे किछि प्रोडक्शन टैक्सेस और प्रोडक्शन सब्सिडी ता ऊपरे पडिला जेतोले एडा ता सहित ऐड हे जे फैक्टर कॉस्ट सहित तो हमु कोन मिलिबो वी गॉट द जीबीए एट द माने बीसी रो अर्थ हमें ताको कहूछु it is called the base price basic price हमें कहूछु ठीक अछि एटा सेकंड पॉइंट थर्ड पॉइंट होची तो मार्केट को पळेला बर्तन कंपनी तो तार एक्साइज टैक्स वगैरह सब दे देला बर्तन मार्केट पसला आपण गोटे जेतोले गाड़ी किनुछन सेतो रोड टैक्स वगैरह भरछन ना तो नाउ द प्राइस हैज आल्सो नाउ अगेन इट चेंज्ड ठीक अछि तो तांको हमें कहूछु जीडीपी मार्केट कॉस्ट कहूछु बा मार्केट प्राइस कहूछु बुझि परछंती एवरीवन गॉट दिस again sir ठीक अछि तो हां तो आमे सेही जिंसो आमे कहूछु कि जीडीपी रे आमे सब बळे टैक्सेस को ऐड करू और सब्सिडी को माइनस कर दो ठीक अछि बिकॉज़ सब्सिडी बिकॉज़ व्हेन यू आर गोइंग टू बाय समथिंग गोटे जिंसो प्रोडक्ट बाय करा बिलो सपोज पे सिलिंडर गोटे बाय करछन तो कोन होची सिलिंडर प्रोडक्शन प्रोसेस रे जहां भी टैक्सेस अछि तो आपण दउचंती ना आपण जणा नै केते टैक्स दउचन बट दउचंती किंतु गवर्नमेंट आपण किछि सब्सिडी दउची तो फाइनली आपण को जो प्राइस ता मार्केट रे पडुची रेट सब्सिडी ना माइनस होची बट टैक्स ऐड ही होची सो दैट इज व्हाट योर जीडीपी इज getting my point तो रिसेंटली न्यूज रे काहे कि अछि बिकॉज़ गवर्नमेंट कोन एनालाइज करछि आरबीआई कहूछि जे वर्तमान जीडीपी और जीबीए भितर जो गैप ता अछि एटा बढ़ियार लागिछि ओके माने जीडीपी बढ़ुछि जीबीए कमुछि व्हाई इट इज सो बिकॉज़ जदि रिसेंटली आपण देखिबे जो टैक्स कलेक्शन ता अछि हमर सो टैक्स कलेक्शन ता वर्तमान बढ़ुछि इंडिया ओके कंपेयर टू योर सब्सिडीज सो दैट्स व्हाई आवर जीडीपी इज इंक्रीजिंग तो बिफोर दैट जदि हमें जीबीए को देखिया को चेष्टा करिया जीबीए कोन होछि टोटल हमर वी आर कैलकुलेटिंग जीबीए फॉर द 8 सेक्टर 8टा सेक्टर पे हमें कैलकुलेट करूछु ए सेक्टर गुडा को लिखा है जो 8टा सेक्टर बट से भीतर कोटेन से देखिए हाईएस्ट सेक्टर होछि होटल ट्रेड ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन एंड सर्विसेज
दैट इज द हाईएस्ट सेक्टर माने सब जीबीए रो सब मैक्सिमम कंट्रीब्यूट से करछि ठीक अछि और ओवरऑल सेक्टर वाइज देखिए ऑब्वियसली सर्विस सेक्टर एक नंबर माने टर्शियरी सेक्टर नंबर 1 आसीबो प्राइमरी सेक्टर सेकेंडरी सेक्टर नंबर 2 आसीबो और प्राइमरी सेक्टर नंबर 3 आसीबो आमे जानि छै ना बिकॉज़ सर्विस सेक्टर सब हाईएस्ट कंट्रीब्यूट करछि तापरे इंडस्ट्री आसुछि तापरे एग्रीकल्चर सब कम कंट्रीब्यूट करछि जीडीपी रे ओके तो जेमति जीडीपी रे कंट्रीब्यूट करछि सेमति जीबीए रे भी कंट्रीब्यूट करछि ओके so this was the news you should माने गोटे थरो go through हे जिवे what is gdp what is gbi I have told you तो आ गोटे कांसेप्ट आछि एटी ग्रीन जीडीपी रो व्हाट इज द ग्रीन जीडीपी जेतोले आमे जो भी माने किछि जिंस प्रोडक्शंस करबा चक्कर जो भी आमे एनवायरमेंटल डिग्रेडेशंस कले तार जदी गोटे मॉनेटरी वैल्यू को आमे माइनस कर दोछु देन वी आर गेटिंग द ग्रीन जीडीपी ओके तो ग्रीन जीडीपी फर्स्ट टाइम पाई यूएन प्रपोज करथला इन द ईयर 1993 रे आपको माने इंडिया रे जदी ग्रीन जीडीपी रो कैलकुलेशंस कथा देखिबे गोटे बॉडी अछि इट दिस बॉडी इज कॉल्ड GAISP so it stands for the green accounting for the Indian states and the union territories project कहि ओके तो सी ग्रीन जीडीपी इंडिया रे माने हेल्प करछि कैलकुलेट करिया रे फर्स्ट स्टेट जे की प्रथम थर पई गोटे मेजर टू मेजर द ग्रॉस एनवायरमेंटल प्रोडक्ट कि एटा उत्तराखंड फर्स्ट टाइम पे मेजर करथले से इंसटा ठीक अछि तो दिस मच इज द ग्रीन जीडीपी पर आ गोटे इंस अछि इट इज कॉल्ड द कुजनेट कर्व तो कुजनेट कर्व जनरली जदी प्रथमे कुजनेट कर्व को होछि इट इज अ इनइक्वालिटी कर्व रो अर्थ कोन माने जदी आपण कुजनेट कर्व को देखिबे इट इज समथिंग लाइक दिस एपट साइड रे इकोनॉमिक ग्रोथ लिखाई थिबो एपट साइड रे आपण इनइक्वालिटी लिखाई थिबो जेमिति इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़िबो सेमति इनइक्वालिटी बढ़ी जिवो गोटे पॉइंट आसीबो तापरे कमिबा स्टार्ट हो ठीक अछि लाइक दैट इट वाज गिवन बाय योर कुजनेट ओके दैट इज कॉल्ड कुजनेट कर्व तो सिमिलरली कुजनेट रो आउटे कर्व अछि इट इज कॉल्ड द कुजनेट एनवायरमेंटल कर्व से कोन कहउचंती गोटे साइड रे लैंड डिग्रेडेशन लेवल ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन आ गोटे साइड रे जीडीपी ग्रोथ कथा कहउछु तो जो डिग्रेडेशंस ता अछि इनिशियली डिग्रेडेशंस गुडा माने इनिशियली डिग्रेडेशन बढ़िबो गोटे पर्टिकुलर पॉइंट आसी गला परे डिग्रेडेशंस कमिबो एग्जांपल केमती जो हमें माने आज जो डेवलप स्टेट गुडा कहउछु यूके हला यूएसए हला तो ए माने आज डेट रे ना से मानको को एनवायरनमेंट जदी देखिबे तो इंडिया टू बेटर अछि हाउ इट इज सो बिकॉज़ से माने ऑलरेडी तांकर से पॉइंट टच करिके बर्तन एनवायरमेंटल इंप्रूवमेंट केस को आसी सरलेनी so like that it was given by your kuznets it is called the kuznets environmental curve बुझी पारले next coming to the human development report किए पब्लिश करूची it is published by यूएनडीपी पे हम पढिबा बिफोर दैट आमे टिके बुझे चेष्टा करिया ग्रोथ कथा कहूछु जो तो ग्रोथ रो केतोले ग्रोथ ही परियो गोटे आमे इकोनॉमिक डेवलपमेंट कथा कहूछु जदी इकोनॉमिक डेवलपमेंट हला तार अर्थ होची कोन हमरो प्रोडक्शंस एंड ऑर्गेनाइजेशन हमर माने परचेजिंग पावर्स वगैरह सेगुडा बढ़ुची तो आमे इकोनॉमिक डेवलपमेंट हला ठीक अछि बट इकोनॉमिक डेवलपमेंट हले ह्यूमन डेवलपमेंट हबो जरूरी नो ह्यूमन डेवलपमेंट केतबेले हबो जेतबेले हमरो चॉइसेस गुडा को एनलार्ज हबो सो एनलार्जमेंट ऑफ द चॉइस ऑफ माने ह्यूमन बीइंग तो ताको आमे कहूछु ह्यूमन डेवलपमेंट ओके बिकॉज आम जेतबेले वुमेन एम्पावरमेंट कथा कहूचे तो से जेतबेले आमे काहे कहूचे बिकॉज सपोज गोटे वुमेन अछि ता पाखरे क्रोर्स रुपीस पड़ची बट ताको पाखरे फ्रीडम नाही जे तम इच्छा रे तम परचेज कर दियो तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो हला बट ह्यूमन डेवलपमेंट ही परला नाही ओके तो ह्यूमन डेवलपमेंट तीनटा एस्पेक्ट अछि हम जानिछु व्हाट इज कॉल्ड द जो हमें लाइफ एक्सपेक्टेंसी कहूछु सेकंड इज एक्सेस टू नॉलेज हां थर्ड इज द डिसेंट माने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो हमें कहूछु ओके so there are the माने dimensions जोटा में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को मेजर करूछु एगुडा को किछि अदर इंडिसेस मध्ये अछि ह्यूमन डेवलपमेंट रो रिपोर्ट भितरे आसे जेमति कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स होते आसे जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स होते आसे तापरे होछि जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स एस्टिमेट होते आसे इनइक्वालिटी एडजस्टेड एचडीए होते आसे तो these are that much detail you should not remember just एतिकी मन रखंतु एचडीआई कोन किए बाहर करूछि तार तीनटा इंडिसेस कोन अछि ए जो कहले माने लाइफ एक्सपेक्टेंसी कथा कहले एजुकेशन बा एक्सेस टू नॉलेज कथा कहले और फाइनली हमें स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बा पर कैपिटा इनकम कथा कहूचे इंडिया रो एचडीआई पर्सन केते इट इज 132 आउट ऑफ 191 कंट्री तो ग्लोबल जो एचडीआई अछि एटा डिक्लाइन करछि काहे कि डिक्लाइन करछि बिकॉज़ कोविड जोगु गोटे कारण सेकंड होछि रशिया यूक्रेन वॉर और थर्ड जिंस होछि क्लाइमेट क्राइसिस जोगु ओके तो कोविड पर बहुत जनकर लाइफ एक्सपेक्टेंसी कमी छी बिकॉज़ कोविड जो लार्ज स्केल डेथ हितला तापरे एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी हैज ब्रॉट डाउन
तो यूएनडीपी ऊपर जे देखिबे 1958 रे एस्टाब्लिश हेतला यूएन रो गोटे स्पेशलाइज्ड ऑर्गन ओके तो माने प्राइमरी ऑर्गन नु हो स्पेशलाइज्ड जो एजेंसीज गुडा को हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क रे अछि ओके मैंडेट कोन जेमति कि पॉवर्टी को एंड करिया पई बेटर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को गवर्नेंस को एस्टाब्लिश करिया पई रूल ऑफ लॉ बा इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशंस को एस्टाब्लिश करिया तार काम ओके एटा को प्रमोट करिया पई से चेष्टा करे इंडिया इज अ मेंबर 170 टा मेंबर अछंती these are the things not required okay coming to the poverty elevation से हमें देखिबा जो इकोनॉमिक एडवाइजर काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर एटा गोटे इकोनॉमिक एडवाइजर काउंसिल अछि टू द प्राइम मिनिस्टर से माने कोन करछन्ती स्टेट इनइक्वालिटी रिपोर्ट पब्लिश करछन्ती ओके तो सेही रिपोर्ट विषय जदि हमें देखिया तो पोवर्टी इज यूजुअली हमें कोन कहूछु एब्सोल्यूट पोवर्टी ही पारे बा रिलेटिव पोवर्टी ही पारे एब्सोल्यूट पोवर्टी कोन बिल्कुल जनक पाखरे बिल्कुल खाइया पे पैसा ही नाही देन से एब्सोल्यूट पोवर्टी रहसे बट सपोज मैं आपण गोटे एरिया रे रहउछन्ती भुवनेश्वर रे से एरिया समस्त पाखे बीएमडब्ल्यू बा किसी माने लग्जरी कार अछि आपण पाखे गोटे ऑल्टो अछि तो नाउ यू आर पुअर बट दैट इज ए रिलेटिव पोवर्टी यू आर गेटिंग माय पॉइंट तो वर्ल्ड बैंक किसी सजेस्ट करथला 1.9 डिग्री $9 पर डे एतिक एक्सपेंडिचर पई थिबा दरकार बट दिस वाज आल्सो चेंज्ड हम देखिबा केते हिची नुवा रिपोर्ट रे So as I have told you, को absolute poverty कौन होगा, relative poverty कौन होगा. तो poverty को estimate करियर approach कौन ही पारे. गोटे wealth approach ही पारे, गोटे capacity approach ही पारे, गोटे multi-dimensional poverty approach ही पारे. Well-being रो approach obviously ये माने Eric Ladd सी देथिले, not important. Capacity approach is important because अमर्त्य सेन ताकू प्रोपागेट करथिले तापरे मल्टी डिमेंशनल पोवर्टी जो कहूछु दैट इज रिसेंटली वेरी मच इंपोर्टेंट बिकॉज यूएनडीपी हला किबा जो ऑक्सफोर्ड पोवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इंसेंटिव माने इनिशिएटिव अछि ए माने यूज करछन 2010 ऑनवर्ड्स दैट इज कॉल्ड द मल्टी डिमेंशनल माने पोवर्टी इंडेक्स से भीतर कोन थिबा दरकार जो एचडीए रो इंडेक्सेस गुडा को एजुकेशन हेल्थ एंड स्टैंडर्ड लिविंग ओके based on these three parameters access समस्त पाखरे अछि ना नहीं based on that they are going to measure okay तो poverty estimations इंडिया रे जे देखिबा गोटे सबसे रिसेंट कमिटी होची रंगराजन कमिटी जोटा 2014 रे हितला से कोन करथिला से तांको एनालिसिस अनुसार से हाउस होल्ड सर्वे कथा कहथिले तो एवरी हाउस होल्ड रो सर्वे और तार कंडीशंस को देखिकी से कोन करथिले 29% 29.5% इंडियन पॉपुलेशन इज पुअर से कहथिले बट ए रिपोर्ट को गवर्नमेंट एक्सेप्ट कला नाही ता पूर्व रे 2009 रे गोटे कमिटी हितला दैट इज कॉल्ड तेंदुलकर कमिटी से कोन करथिले मंथली पर कैपिटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर माने पर कैपिटा प्रति मास रे प्रति लोक केते कंजम्पशन पय एक्सपेंडिचर करछि निजो पय खाया पय निजो पिंधिया पय निजो ट्रैवलिंग पय निजो एंटरटेनमेंट पय केते खर्च करछि बेस्ड ऑन दैट दिस रिपोर्ट वाज पब्लिश्ड ओके तो ताकू से कंसीडर करथला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिसेंटली जे देखिए नीति आयोग रो कोन अछि नेशनल एनपीआई जो मल्टी डिमेंशनल पोवर्टी बेसलाइन इंडेक्स बाहर करूची से जो बेसलाइन इंडेक्स ता नीति आयोग बर्तन बाहर करूची से कहार रेफरेंस रे बाहर करूची NFHS5 व्हाट इज NFHS5 नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे फिफ्थ असेसमेंट रिपोर्ट माने फिफ्थ रिपोर्ट ता रिपोर्ट बेसिस रे से माने बर्तन ए जिनसा फाइंड करछन ठीक अछि तो एडी माने कोन करछंती तो देखो जो आपनकर एनपीआई थिला माने ए जो एनपीआई रे 10टा पैरामीटर ऑलरेडी थिला 10टा पैरामीटर छाडी के आउ दीटा एक्स्ट्रा पैरामीटर को से माने यूज करछंती इट इज कॉल्ड एंटीनेटल केयर और बैंक अकाउंट्स ओके तो टोटल 12टा पैरामीटर रे नीति आयोग पर्सन एस्टिमेट करछे इट इज कॉल्ड एनपीआई बेसलाइन रिपोर्ट ओके नेक्स्ट अदर इनइक्वालिटी मेजर जदि हमें देखिबा वर्ल्ड बैंक रो गोटे बाइनल रिपोर्ट अछि इट इज कॉल्ड पॉवर्टी एंड शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी 2022 करेक्टिंग द कोर्स रिपोर्ट गोटे नॉट दैट इंपोर्टेंट नेक्स्ट रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी इंडेक्स गोटे रिलीज होछि इंडिया रो रैंक अछि 123 से रिपोर्ट रे के रिलीज होछि ऑक्सफार्म इंटरनेशनल ताको रिलीज होछि ओके डेवलपमेंट ऑन द फाइनेंशियल इंक्लूजन रे हम जे देखिबा फाइनेंशियल इंक्लूजन अर्थ कोन समस्त पाखे फाइनेंशियल एक्सेस थिबा दरकार जेमति आपण कहउछन आपण पाखे बैंक अकाउंट अछि सो यू कैन सेव योर मनी यू कैन बोरो सम अमाउंट एज ए लोन you can transfer your money so that is called the financial inclusion okay so a financial inclusion pai को type ro kon ki reports वगैरह रिलीज करछन जेमति कि ग्लोबल फिंडेक्स डेटाबेस रिपोर्ट 2021 की रिलीज करथला वर्ल्ड बैंक रिलीज करथला को एते इंपोर्टेंट नै आउट होची फिनक्लुवेशन तो फिनक्लुवेशन कोन इंडियन पेमेंट बैंक जो हमर इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक
ताकू रिलीज करतला फाइनेंशियल इंक्लूजन को शो करिया पे आउ इंडियन पेमेंट्स बैंक कथा कहूची पोस्ट पेमेंट बैंक इट इज ए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रो 100% सब्सिडी वाला फॉर्म एटा जानी छे माने बिकॉज़ इंडिया पोस्ट का कहारो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रो तारा भी पर्यंत शेयर वगैरह लॉन्च तो करा ही नहीं तो सेटा 100% कहा पाखरे अछि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पाखरे अछि नेक्स्ट फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स जोटा कि एफआई इंडेक्स कहउचंती एटा के रिलीज करूचे सो इट इज रिलीज्ड बाय ए आरबीआई रिलीज करूचे ओके दैट्स ऑल किछि की टर्म्स गुडा को देखंतु जेमति गोटे ग्लास क्लिप को हुए केतेबेले ग्लास क्लिप को हुए जेतेबेले किछि सिचुएशन गोटे कंपनी सिचुएशन रो जेतेबेले तांकर बैंकरप्ट हो जाउछन्ती बा सिचुएशन डिफिकल्ट होछि मैनेज करिया पे से समय रे से कोन करूछन्ती तांकर जो वुमेन्स को छन्ती वुमेन को टॉप पोजीशन दे देबे सीईओ पोजीशन दे देबे बिकॉज़ एनी हाउ से कंपनी तो बुडीवार अछि ही बर्तन से कंपनीटा बुडी जीव तो से कोन करिवे तो दोस्तों दे देबे वुमेन को बिकॉज़ हमर टॉप मैनेजमेंट होछनी गोटे फीमेल से इनकैपेबल दैट्स आई एम लॉस हो गला ओके सो इट्स लाइक ए बुझी पड़छ ना जो हमर मोरालिटी अछि कि हमें वुमेन को वीक हिसाब रे देखुछु तो सेही जिंस को पुनी आउथे प्रूफ करिया पे गोटे टाइप रो स्टेप यू कैन से ओके it is written like that which it about a situation in which the women are promoted to the high positions during the time of the crisis and or during the recession so the chances of failure is more likely okay so glass ceiling glass cliff ठीक glass ceiling भी तब कहते कि मु जाननी है ते पारे नेक्स्ट इज टेक्निकल रिसेशन केतोला हमें टेक्निकल रिसेशन कहउछु जेतोले गोटे फाइनेंशियल साइकिल रे जदी टू सक्सेसिव क्वार्टर रे दीटा क्वार्टर बिकॉज़ देखंतु जीडीपी या फिर जेतोले हमें फाइनेंशियल मेजरमेंट करू तो गोटे ईयर को हमें प्रति 3 मास रे डिवाइड करू चारिटा क्वार्टर रे तो 4Q हिसाब रे अपन देखिबे न्यूज रे क्वार्टर 1 क्वार्टर 2 एमटी कर लिखा हिथिबो ठीक अछि जदी दीटा क्वार्टर रे दीटा कंसेक्यूटिव क्वार्टर रे एनी टू कंसेक्यूटिव क्वार्टर रे जदी रिसेशन जदी नेगेटिव हमर ग्रोथ होची इट इज कॉल्ड रिसेशन ताकू टेक्निकल रिसेशन हमें कहूछु ठीक अछि कोविड समय रे इंडिया एक्सपीरियंस करतला से टाइप रो बर्तन डूम स्लूप व्हाट इज द डूम स्लूप एटा बर्तन यूरोप रे ए सिचुएशन हबा को जाउची बिकॉज़ से मानको जो बैंकिंग सिस्टम मोर माने एनी टाइम दे कैन फेस ए वल्नरेबिलिटी बा गोटे टाइप रो फॉल हे पारे बैंकिंग सिस्टम रो काहे कि से मानको जो सोवरिन बॉन्ड थिला ता प्राइस ड्रास्टिकली वोलाटाइल हवारे लागि छी ओके सोवरिन बॉन्ड माने कोन जो बॉन्ड्स गुडा को गवर्नमेंट रो नारे जो बॉन्ड्स गुडा को रिलीज हेते से बॉन्ड्स कथा हमें कहूछु कमिंग टू क्रिएटिव इकोनॉमी ऑलरेडी कहि दी क्रिएटिव इकोनॉमी कोन जो अंकटाड अछि माने यूनाइटेड नेशंस रो यूएन कमीशन ऑन द ट्रेड एंड डेवलपमेंट तो से क्रिएटिव इकोनॉमी को गोटे एमर्जिंग कांसेप्ट that is going to deal with the interface between the creative culture इकोनॉमी और टेक्नोलॉजी से कथा से कुछ मो क्रिएटिव इकोनॉमी कथा कहली आपन को सेमते अमेज़न प्राइम रो एग्जांपल्स नै कि हमें कहिथले माने अमेज़न सहित बर्तन जो हमें टाई अप करिछु ओके सो क्रिएटिव इकोनॉमी माने जे कोनोसी टाइप रो गोटे टाइप रो जो आपन कहले इमेज हो साउंड टेक्स्ट सिंबल बा किछि भी जो आर्ट फॉर्म्स गुडा रहला ताकू नै कि हम केमते इकोनॉमी जनरेट करि परिबा ओके दीस आर द आर्ट क्राफ्ट्स एंड एवरीथिंग व्हाट इज अ ट्विन सिटी डेवलपमेंट तो जनरली कोन होची जो भी हम मेट्रो सिटीज गुडा रहउची से गुडा कंजेस्टेड ही जाउची तो से कंजेस्टेड होआ परे माने स्लम्स डेवलपमेंट बा फ्रिंज डेवलपमेंट ए सब जिंस होची तो ताकू काउंटर करिया पे गोटे कांसेप्ट अछि दैट इज कॉल्ड द सैटेलाइट सिटी डेवलपमेंट सैटेलाइट सिटी माने कोन से गोटे सिटी सिमिलर गोटे सपोज भुवनेश्वर टाइप रा गोटे छोटो सिटी भुवनेश्वर टिके बाहर रहिबो जो एरिया रे बर्तन स्पेस अवेलेबल अछि बट exactly भुवनेश्वर जो amenities available अछि exactly से amenities सेठी मध्ये मिलिबो so those type of city is called those type of concept is called the twin city development okay coming to the urban 20 what is urban 20 G20 रो माने डिस्कशंस होतला जो भी टॉप माने सिटीज गुडा करे जो भी प्रॉब्लम से माने फेस करूछंती एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स हो बा सेटलमेंट प्रॉब्लम्स हो डेवलपमेंटल प्रॉब्लम्स हो तो सेही प्रॉब्लम्स से माने म्यूचुअली से माने डिस्कस करिवे कोन प्रॉब्लम होची और से माने को वे फॉरवर्ड कोन ही परिबो आ बा कि बेस्ट सॉल्यूशंस कोन माने सपोज दिल्ली तारो पॉल्यूशंस रिलेटेड किछि प्रॉब्लम्स अछि ताकू सॉर्टेड करिया पे सॉर्ट आउट करिया पे को टाइप रा अप्रोच नउछि और जदी से अप्रोच पड़रे किछि सक्सेस हेछि तो मे बी सिमिलर प्रॉब्लम जदी अन्य गोटे किछि सिटी फेस करछि से भी सेही टाइप रो जिंसो को रेप्लिकेट कर परियो सो इट इज द अर्बन 20 अंडर द G20 ओके नेक्स्ट ट्विन ट्रांजिशन व्हाट इज ट्विन ट्रांजिशंस बिकॉज़ देखंतु आमे कोन करू ना एनवायरनमेंट और डिजिटल सपोज एबे डिजिटल वर्ल्ड रे किछि भी एवेन्यूज अछि किछि भी अपॉर्चुनिटीज अछि ताकू
आउ इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स को हम केमे लिंक करिनु आज पर्यंत आमे ए केबे भाबिनु जे इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स को डिजिटल वर्ल्ड रे जो भी एवेन्यूज अछि ता थ्रू रे हमें सॉल्व करि परिबा ठीक अछि जेमति कि सपोज एबे कहूचे गोटे पर्टिकुलर जगह रे सपोज एबे दिल्ली रे कथा कहंत दिल्ली रे सपोज एयर पोल्यूशन हाई हैला तो इंडिविजुअली लोक निजरो एयर पोल्यूशन निजो एरिया रो एयर पोल्यूशन का जो कोनसी प्रॉब्लम्स होची ताको गोटे पोर्टल रे इमीडिएटली मोबाइल ऐप रे व्हाट्सएप टाइप रो गोटे अपडेट करि परिबे तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू वी आर माने सॉल्विंग वी आर ट्राइंग टू सॉल्व the economic sorry environmental by ecological problems with the use of your digital advancement okay तो एई दिटा को हम जेतले लिंक करूछु और तापर रे जो हमर माने जो गोटे गोटे collaborative गोटे एफर्ट जनरेट होची that is called the twin transitions okay so it is largely on माने गोटे टाइप रो untapped opportunity for the technology and data driven sustainable goals को हम अचीव करिया पे rather than treating the digital and the sustainability in isolation it is a combination of both to unlock the huge benefits in terms of efficiency and productivity okay बुझी परले next is coming to cost of living index cost of living index गोटे एटा प्राइवेट एंटिटी अछि से रिपोर्ट को पब्लिश करे से एंटिटी ना होछि द इकोनॉमिस्ट ग्रुप जदि खाली एतिकी मन रखिबे जे बिकॉज़ इट इज नॉट पब्लिश बाय एनी यूएन ऑर्गेनाइजेशन के पब्लिश करन गोटे प्राइवेट ग्रुप अछि जोटा कि द इकोनॉमिस्ट ग्रुप कहि से माने प्रति वर्ष पब्लिश करंती जे वर्ल्ड रो को शहर सबुठ अधिक एक्सपेंसिव केबे हांगकांग आसे केबे सिंगापुर आसे तो रिसेंटली 2022 रिपोर्ट अनुसार न्यूयॉर्क आछि ओके नेक्स्ट डेवलप्ड कंट्री थ्रू द पंच प्राण एटा हमरो पीएम मोदी कहितले इंडिया को गोटे डेवलप्ड स्टेट करिया माने बिकॉज़ वर्तमान आमे लोअर मिडिल इनकम कैटेगरी रे आसु सेइटु बाहर की हमकु गोटे डेवलप्ड कंट्री रे स्टेटस दबा पे बाय 2050 माने अनदर 25 इयर्स रे मोदी को कहतले कि हमें वी शुड अप्रोच दिस अडॉप्ट दिस पंच प्राण ओके बिकॉज़ जेमते हम कोचु एचडीआई इंडेक्स रे वर्तमान हमरो रैंक अछि 132 इट इज वेरी पुअर ओके तो वी हैव टू गो फॉर ए होलिस्टिक डेवलपमेंट तो से पंच प्राण रो कोन अछि फर्स्ट गोल होची गोल ऑफ डेवलपमेंट इन इंडिया रिमूव ऑफ एनी ट्रेस ऑफ कॉलोनियल माइंडसेट को हमें चेंज करिबा टेकिंग प्राइड इन आवर रूट्स आम निजर वैल्यू सिस्टम को हमें प्राइड रखिबा यूनिटी रहिबा दरकार देन सेंस ऑफ ड्यूटी अमंग द सिटीजंस सो दीज आर समथिंग मेंस राइटिंग पे एडा अधिक दरकार रादर देन इन द प्रीलिम पर्सपेक्टिव फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरी फंड कोन एटा आपनकर वर्ल्ड बैंक माने इनिशिएट करथिला जनरली कोन जो हमर कोविड समय रे प्रिवेंशंस प्रिपेयर्डनेस एंड रेस्पॉन्स तो जो भी जोनोटिक डिजीजेस गुडा करला इट इज सच एज द जोनेटिक माने जोनोटिक डिजीज हला तार सर्विलेंस तार लेबोरेटरी एस्टैब्लिशमेंट इमरजेंसी कम्युनिकेशंस केमती करिबा क्रिटिकल हेल्थ वर्कफोर्स कैपेसिटी डेवलपमेंट वर्कफोर्स कैपेसिटी डेवलपमेंट अर्थ जो एबे सपोज कोविड आसला कोविड पूर्व कोनोसी डॉक्टर बा नर्स से माने रेडी नहांती जे केमती कोविड टाइप सिचुएशंस को फेस करियो तो तांको गोटे टाइप ट्रेनिंग प्रोग्राम दरकार तांको पई किछि इक्विपमेंट्स दरकार से सब जिंस को करिया पड़िबो सो फॉर दैट वी नीड इमीडिएट फंड्स तो एटा गोटे टाइप कोलैबोरेटिव एफर्ट थिला वर्ल्ड बैंक रो जा फल रे टू माने अदर माने ऑब्जेक्टिव इज टू क्रिएट द प्रिवेंशन प्रिपेयर्डनेस एंड रेस्पॉन्स ओके ताको हमें पीआरपी कहूछ सॉरी पीपीआर कहूछ ओके सो दिस मच आपनकर फर्स्ट वी माने चैप्टर थिला नेक्स्ट हम फिस्कल पॉलिसी काली देखियो तो इज दिस वे इज इट हेल्पफुल और किछि चेंजेस दरकार तो मते कहंतु सही सर आई विल ट्राई टू चेंज सर जीपी एतिके आउथरे कह देबे जीबी जीबी होची कबे जीडीपी टा में कोन कहूछ गोटे देशर ओवरऑल जो आपनकर माने जो सिचुएशन अछि वर्तमान माने ओवरऑल हमर इकोनॉमिक सिचुएशन अछि बिकॉज़ गोटे देशरे गोटे वर्ष भितरे जो टेरिटरी रहला सेही भितरे केते हम प्रोडक्शंस कल ओके जहां भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कले ताको समस्त में मिक्स देबे तार फाइनल जो प्राइस हैला ताको हम जीडीपी कहूछ ओके सपोज भाबो तो आपन को पाखरे आपन 10टा पेन अछि सेति की ही टोटल भाबो से इंडिया होजे देता 10टा पेन अछि 10टा पेन रो फाइनल प्राइस मिसे देबे ना तो सेटा होची जीडीपी बट से 10टा पेन को प्रोड्यूस करिया पे किछि तो इनपुट लागि थिला ना बिकॉज़ प्लास्टिक गोटे दरकार भीतर रिफिल दरकार ऊपर गोटे नीड दरकार तो ताको प्रोड्यूस करिया पे तो 10 15 गोटे पेन बट ताको प्रोड्यूस करिया पे 2 टका 3 टका किछि लागि थे तो सेही जो वैल्यू टा हम माइनस कर देछि का तो हमें जीबीए बाहर बिकॉज़ प्रत्येक सेक्टर सपोज अपन भाबंतु कि अपन गोटे कंपनी करछन प्रति वर्ष आपनकर माने टोटल माने जो टर्नओवर होची सपोज 1 करोड़ रुपीस माने गोटे कोटी टंकार आपन माने आपनकर कारोबार होची बट गोटे कोटी टंका कोन आपन लाभ होची कि
କିଛି ତ ଇନଭେଷ୍ଟ କରୁଥିବେ ନା, କିଛି ତ ର ମେଟେରିଆଲ କାହାଠୁ କିଣୁଥିବେ, ଏମ୍ପ୍ଲୟି କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସାଲାରୀ ଦଉଥିବେ, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଫିଟ୍ ତ ସେଇଟା ନୁହଁ ନା। ତ ଆପଣଙ୍କ ଯୋଉ କଷ୍ଟ ଅଛି ତାକୁ କାଟିଦେଲେ ସେଇଟା ରହିବ, ତ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଦ କ୍ୟାନ୍ ସେ ଏଫ୍ଜିବି। Is it okay? Yes, Sir, sir. individually growth ର sir GPA କହିବେ କି sir?